fill in the blank study करनी है. Name the erroneous idea that the gamete contain miniaturized version of all of the elements present in the adult. इसे कहते हैं प्री फॉर्मेशन. गलत आइडिया जो था कि तमाम एग के अंदर तमाम माइनेचराइज्ड वर्जन मौजूद होते हैं ये अडल्ट के. नेम द बिलीव दैट द एग कंटेन ऑल मटेरियल फ्रॉम विच द एम्ब्रियो इज कंस्ट्रक्टेड, दैट इज द एपिजेनेसिस. During the 4th century before Christ, who described the essence of epigenesis theory, which depended on the unexplained creative principle to direct the assembly, that is the Aristotle. In separate experiments in 1888 and 1892, who set out to determine whether epigenesis or preformation was correct. William Rocks के और Hans Frisch के experimentation piece पे. Rocks in 1888 used which animal embryo for his experiments? Amphibian को Rocks ने use किया था. Frisch used echinoderm embryo for his experiment in which year? उसने 1892 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था और echinoderm को यूज किया था. According to the biologist of the today, who was more correct, Rocks or Frisch? Name the study of the animal development from a fertilized egg to the formation of the all major organ system is the embryology. To study the genetic control of development, biologist uses the tools of which branch of biology? Molecular biology को use किया जाता है. Name the membrane that raises off the surface of the egg after sperm penetration, that is the fertilization membrane. The egg coat of an egg consists of which compound? एग कोट के अंदर आपको प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स मिलेंगे. फॉर पेनिट्रेशन द जेल कोट ऑफ एन एग, द स्पर्म ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स पोसेस एंजाइम्स कॉल्ड द स्पर्म लाइसिन. नेम द एंजाइम फिल्ड कैप ऑन द हेड ऑफ द स्पर्म. इन हेड ऑफ स्पर्म पे जो एंजाइम फिल्ड कैप है उसे कहते हैं एक्रोसोम. In men, 80 million sperm per ejaculation often mean that reduced fertility. Fertility. Name the layer that is just outside the plasma membrane. Egg plasma membrane के बाहर जो बिल्कुल membrane होती है उसे कहते हैं vitelline layer और zona pellucida. The fusion of acrosomal and egg membrane is the beginning of the word egg activation. Start हो जाती है. Name the series of biochemical changes in the egg that ensure the completion of fertilization and initiate embryonic development is the egg activation. Biologists mostly used which group of animals to study the events of the egg activation? Echinoderms. क्योंकि लैब में इन्हें ग्रो करना ईजी होता है ना, तो ऐसे एनिमल्स चूज किए जाते हैं जिनको ग्रो करना ईजी और जिनकी फीड पे कम से कम खर्च आए. The earliest changes in the zygote occur in which part of the zygote? Plasma membrane और cortex में सबसे पहले changes आती हैं. Name the outer region of the cell membrane, cell cytoplasm, that is the cortex. What is the result of multiple fertilization? अगर multiple fertilization हो जाती है तो क्या होगा? जेनेटिक इम्बैलेंस नज़र आएगा आपको देखने में, और जो एम्ब्रियो होगा वो नॉन वायबल होगा, यानी वो जिंदा नहीं रह सकेगा. नॉन वायबल एम्ब्रियो फाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस? नॉन वायबल एम्ब्रियो आपको किस प्रोसेस के रिजल्ट में मिलेगा? मल्टीपल फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो एम्ब्रियो नॉन वायबल हो जाएगा. Ionic changes in the plasma membrane and the formation of fertilization help to prevent multiple fertilization से बचाता है. The fertilization membrane forms as granules in the cortex discharge into the region between the egg plasma membrane and what? Vitelline layer. The cortical granules release what to loosen the vitelline layer contact with the plasma membrane is the enzymes and the water. In zygote, proteins on the cortical granules thicken and strengthen vitelline layer. The granules in the cortex allow which substances to enter the space between the vitelline layer and the egg plasma membrane, causing the vitelline layer to lift off the egg is the water. Name the dark arching band that form on the surface of amphibian zygote opposite to the point of sperm penetration is the gray crescent. Post-fertilization changes help prepare the zygote for ensuring माइटोटिक डिवीजन्स. पोस्ट कहते हैं बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होती हैं वो जाइगोट को हेल्प करती हैं कि वो माइटोटिक डिवीजन्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करे. व्हाट इज़ द रेट ऑफ द मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस इन द जाइगोट? जाइगोट के अंदर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस बहुत लेटर होती है क्योंकि मैटरनल डोमिनेंस है, मदर का आरएनए यूज़ कर रहा होता है.
A zygote. In zygote, messenger RNA is activated and it directs the formation of bulk of the protein synthesized in the early stages of the embryonic development. This influence is called maternal dominance. Name the region of the egg that contain less yolk, more mitochondria and ribosome and is more metabolically active. उसको कहते हैं animal pole. Name the region of the egg opposite the animal pole of the egg. जो animal के pole के opposite region होगा उसे कहेंगे vegetal pole. Name the early mitotic and cytoplasmic division of the embryo. इसको कहते हैं cleavage. Any of the cells produced by the cleavage of the zygote are called blastomeres. Egg yolk is a mixture of protein, lipids, and glycogen. The food reserved for developing embryo is called egg yolk. What is the resulting blastomere in the eggs with evenly distributed yolk? Uniformly sized blastomere. What is the resulting blastomere in the egg with unevenly distributed yolk? Holoblastic cleavage. Cleavages that completely divide the egg are called meroblastic cleavages. Name the cleavages that cannot completely divide the embryo. Because of the large quantity of the yolk is the meroblastic. Oh sorry, ऊपर 40 वाले का ऑप्शन जो है वो हॉलोब्लास्टिक है. इन गाइनोडर्म व्हाट इज द पैटर्न ऑफ क्लीवेज? हॉलोब्लास्टिक है. एम्फीबियन में भी पैटर्न ऑफ क्लीवेज हॉलोब्लास्टिक है. बर्ड्स और रेप्टाइल्स के केस में मीरोब्लास्टिक है पैटर्न. The pattern of cleavage where blastomeres are oriented directly over one another and characteristic of the evolutionary lineages leading to the gynoderm, and which group is the chordates. Name the blocks or layers of the embryonic cells that give rise to tissues and organs of the animals is called primary germ.